Assalamu alaikum guys, welcome back. This is your instructor Shafat Khan and we are back with another video on this time on the National Nmdcat 2020 paper, and we are gonna try completing the entire paper solution in these videos. Okay, so bear with me, stick with me, and let's get started. Okay, so here we are, the National Nmdcat 2020 paper complete solution, and let's get started. Okay, there we are. The first question says, okay, if during the circular motion the tangential velocity of a body becomes double, a centripetal force becomes, okay, what happens to a centripetal force? Well, यहाँ पर एक simple formula बस लगा देना है centripetal force का, जो कि almost सबको ही अब आता होगा इतनी practice के बाद. Fc is equals to mv squared upon r. We know that centripetal force is directly proportional to the velocity squared, right? So if you double the velocity, centripetal force would become 4 times, okay? Meaning it will increase the square times of 2. तो अगर इसको आप 2 times increase करेंगे तो वो 4 times increase हो जाएगा. डायरेक्ट रिलेशनशिप सिंपल मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये 4 times का आंसर है. क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं. अंडर व्हाट कंडीशंस एन ऑब्जेक्ट विल हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस. अच्छा, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेशन की बात जो है चल रही है, ठीक है? लीनियर मोशन तो नहीं हो सकता एंड रैंडम मोशन भी मेक्स नो सेंस, बट सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेशन आर द टू की टर्म्स, ठीक है? मतलब ये इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है आपका. वेल, दोनों आंसर है, ठीक है? सर्कुलर मोशन इज ऑब्वियसली द बेस्ट आंसर, क्योंकि ये आपको पता है, आप बुक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हाँ, सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करेगा एंड देन एक स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा जब आएगा तो जो सर्कमफ्रेंस होगा, दैट्स द डिस्टेंस इट कवर्ड, एंड since it returned back to its original position, so its displacement is going to be zero. Lekin if you look at the oscillation part over here, in oscillation, if you take the example of a spring, a mass, a load attached to a spring, so what would happen? This spring would move from its mean position, okay? It would also move down here, then it will return back to the mean position, then it will go up, and then again it will return down to the mean position, completing its first oscillation, right? तो अब इसमें भी अगर आप देखें तो इसने कुछ डिस्टेंस नीचे जाते हुए, ऊपर आते हुए, फिर ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए कवर कर लिया, बट डिस्प्लेसमेंट सिंस उसकी ओरिजिनल पोजीशन इज द सेम, therefore displacement is also zero in this case, ठीक है? So well, आंसर की में तो वेल बाय रूल उनको दोनों बी एंड डी दोनों को ही करेक्ट करना चाहिए, ठीक है? बोथ बी एज वेल एज डी. लेकिन अगर कोई एक करेक्ट करते हैं तो ज्यादा चांसेस है कि वो सर्कुलर मोशन को करेक्ट करें, क्योंकि ये ज्यादा कॉमनली यूज होता है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है. लेकिन ऑसिलेशन ही आपका करेक्ट आंसर बी है, ठीक है? लेकिन सर्कुलर मोशन अगर वो चाहें तो कर सकते हैं, वरना ऑसिलेशन भी हो सकता है कि वो कर लें, कोई भरोसा नहीं है उनका. आगे चलते हैं, आंसर की जब आ जाए फिर पता चलेगा. नाउ क्वेश्चन 3, which one of the following properties is not exhibited by longitudinal waves? तो ये तो थ्योरी का क्वेश्चन था. पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं करती, ठीक है? Moving on to question 4, the speed of sound in air is 332 meters per second. The speed of sound at 22 degrees Celsius will be. अच्छा, इसमें वो फॉर्मूला लगा दें आप, ठीक है? तो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या है भाई? 0.61 into the temperature जो कि 22 है plus 332, ठीक है? इससे आंसर आपका आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 345 पॉइंट समथिंग. तो यही आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है? Moving on to the next, astronomers calculate the speed of distant stars and galaxies using which of the following phenomena? अच्छा, distant stars मतलब stars जो आपसे बहुत दूर है. अच्छा guys, इसमें concept इसके behind ये है कि if the stars are very far away or they are very close to you, meaning actually not very close to you but like relatively close to you, so those stars are not actually stationary, they are moving, okay? They're either moving away from you or towards you. So the stars which are moving away from you, the wavelength of the wave which reaches you, it appears to be longer than its original wave, and the star which is coming towards you, the wavelength of the wave which reaches you, it appears to be smaller or shorter than the original wave. So in short, अब इसको रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट कह सकते हैं. रेड शिफ्ट कब होता है? रेड शिफ्ट भाई जब स्टार आपसे क्या हो रहा हो, दूर जा रहा हो, ठीक है? व्हेन स्टार मूव्स अवे,
moves away from you, and violet shift या blue shift कब होता है? When star comes towards you, towards you. And by the way, stars are very distant. They are very distant. They are far apart from you. Okay, far away from you. तो इसलिए इस वैसे ये red shifting and blue shifting ये होती है Doppler effect की वजह से, ठीक है? इसके behind आपको theory तो पता ही होगी, of course, ठीक है? क्योंकि ये waves जब आपसे दूर जा रहे हो तो waves दूर दूर हो जाती हैं, ठीक है? जब मतलब एक object जब दूर जा रहा हो तो wave fronts दूर दूर हो जाते हैं, और अगर आप एक ऑब्जेक्ट आपके करीब आ रहा हो तो वेव फ्रंट्स करीब करीब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, ठीक है? इसके ऊपर मैं ज्यादा बात और नहीं करूंगा, ठीक है? आगे चलते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड. Okay, so now this is the question. In a ripple tank, 40 waves pass through a certain point in 1 second. If the wavelength of the wave is 5 centimeter, then the speed of the wave is, okay, so guys, ये simple सा question है कि 40 waves passing through a point in 1 second. So waves per second is the definition of frequency. So they've given you the frequency of the wave. Frequency is 40 hertz. Okay, now if you have the frequency of the wave, then what else is given to you? Wavelength is also given to you. Frequency is 40, wavelength is 5 centimeters. All you need to do is just find out the speed. Just use the formula V is equals to F lambda. F is 40 times 5 times 10 raised to the power of minus 2. 4 5 is 20. Okay, 200 हो गया, 10 raised to the power of minus 2 ये रहा, दो zeros cancel out हो गए तो 2 बच गया. 2 meters per second is your answer. So that's the answer, D. Now question 7. In which process the entire heat supplied to the gas is converted to the internal energy of the gas? अच्छा guys, this is a typical question. ठीक है, ये एक दो बार पहले भी पास पेपर्स में आ चुका है, एंड ये काफी ट्रिकी भी हो सकता है. वैसे ये पूछ ये रहे हैं आपसे कि ऐसा कौन सा प्रोसेस होगा इनमें से जो कि जिसमें अगर हम हीट सप्लाई करें तो वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, मतलब वर्क डन में कन्वर्ट कोई भी एनर्जी ना हो. तो इसका क्या मतलब हुआ? मीनिंग नो एनर्जी कन्वर्जन टू वर्क डन, नो एनर्जी टू वर्क, W. इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है कि इट्स Q प्लस W, राइट? अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय सॉरी चेंज इन वॉल्यूम प्लस Q, राइट? यही फॉर्मूला होता है, ठीक, वर्क डन ऑफ अ गैस का. अब आपका अगर वॉल्यूम चेंज ही ना हो रहा हो, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो क्या कोई वर्क डन होगा? इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन वर्क डन इज गोना बी 0. And if work done is 0, then of course this entire factor becomes 0. So it's isochoric process. Isochoric matlab when the volume is conserved. Okay, isochoric process is your answer because this is the process during which the volume remains conserved and due to which the work done is 0. ओके, सो अगर वर्क डन 0 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी हीट एनर्जी आप सप्लाई करेंगे, मतलब इस क्यू को जितना भी सप्लाई करेंगे वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी को राइज करने में काम आएगा, ठीक है? मतलब डायरेक्टली आप इंटरनल एनर्जी ही इंक्रीज कर रहे हैं उस केस में. आइसो एडियाबैटिक भी नहीं हो सकता, बाकी नहीं हो सकते, ठीक है? आगे चलते हैं. इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल मतलब when temperature remains constant. Acha, if the temperature remains constant, then what happens to the internal energy? Okay, guys, एक बात मैं आपको बता दूं कि internal energy of a system जो है ना, energy है, right? It depends upon the temperature. Temperature आप बढ़ाएंगे, internal energy बढ़ेगी. टेम्परेचर आप सेम रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, तो इंटरनल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी. वैसे जनरली इसको हम आइडियल गैस के साथ लिंक करते हैं, ठीक है? अब अगर आइडियल गैस की आप बात करें तो आइडियल गैस में आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, ठीक है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो आइडियल गैस में होती ही नहीं है. अगर ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है ना, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे. टेम्परेचर में कोई चेंज इन टेम्परेचर पे मतलब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है. अगर चेंज इन टेम्परेचर आपका 0 हुआ तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आपका 0 होगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आपकी 0 होगी. तो इसलिए
it remains constant because there is no change in internal energy. Let's move on to the next one. Okay, if the potential at a point which is 1 meter from the charge is 1 volt, then the potential at a point which is 2 meter from the same charge will be. अच्छा पोटेंशियल का पूछ रहे हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, V is equals to KQ upon R, ठीक है, V is equals to KQ upon R का फॉर्मूला है आपका, ठीक है। ये पूछ सेम चार्ज के लिए रहे, 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम अ चार्ज इज 1 वोल्ट, तो ये बताएं कि देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट व्हिच इज 2 मीटर अपार्ट, ठीक है। रेशियो मेथड लगा दें, वैसे आपको रिलेशन पता है कि वोल्टेज इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस, राइट। तो अगर वोल्टेज इनवर्सली रिलेटेड टू है टू द डिस्टेंस, तो आप ये कह सकते हैं कि V1 R1 इज इक्वल टू V2 R2, ठीक है। ये मैंने खुद से बना दिया, ये इनवर्स रिलेशन सबके लिए ये आप कर सकते हैं, ठीक है। बॉल्स लॉ की तरह का आपको नजर आ रहा होगा। तो अब पहले V1 की वैल्यू क्या है भाई, 1 वोल्ट जब 1 मीटर था, तो 2 मीटर पे ये बताएं कि वोल्टेज क्या होगा। सो 1 into 1 इज इक्वल टू 2 into हाउ मच, ठीक है। तो R2 की वैल्यू आ गई आपके पास 0.5, नहीं सॉरी R2 की नहीं, V2 की आ गई आपके पास, ठीक है। V2 की वैल्यू आ गई आपके पास 0.5 volts, ठीक है। 1/2 is 0.5, 0.5 is your answer over here, ठीक है। ये 0.5 is the answer। आगे चलते हैं क्वेश्चन 10। The value of electric intensity will dash due to the presence of dielectric medium। अच्छा, dielectric की वजह से उसकी electric field intensity कम हो जाती है, because ये जो dielectric होता है it gets polarized। and इसके लिए मैंने ये फिगर इंटरनेट से निकाली है, ठीक है। ये पहले डाइलेक्ट्रिक के बगैर था, जब डाइलेक्ट्रिक आपने रख दिया तो जो डाइलेक्ट्रिक का साइड पॉजिटिव चार्जेस को फेस कर रहा होगा, ये वाला साइड, ये it becomes negatively charged, and the side which is facing the negative plate, it becomes positively charged। and now what, guess what happens, these charges they start opposing the fields, ठीक है। मतलब ये negative charge जो है, ये उसको क्या कहते हैं, field, ये electric field intensity gets weakened by this effect, in short। and there is another formula as well, you could apply that as well, ठीक है। वही वो ER वाला formula, ठीक है, electric field intensity का, लेकिन वो मेरे ख्याल से सिंध बोर्ड में शायद नहीं है, ठीक है। बाकी बोर्ड्स में, फेडरल बोर्ड में तो ऑफ कोर्स है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो नेट होती है वो E/ER करके कुछ होता है, ठीक है। वो मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा, बट कुछ इस टाइप का ही है शायद। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन, ठीक है। ड्यू टू पोलराइजेशन इट गेट्स weakened। now the slope of the distance time graph will always be, अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड होता है, स्पीड इज अ स्केलर एंड स्केलर आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव आंसर इसका। नाउ एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द रेंज बिकम्स हाफ द मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैक्सिमम रेंज का क्या फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला होता है V0² sin 2 थीटा अपॉन G, राइट। अब उन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम रेंज के हाफ की वैल्यू, मैक्स रेंज कब होगी, मैक्स रेंज होगी 45 डिग्रीज पर, ठीक है। जब डिग्रीज 40, ये आपको थियरी से पता है, टेम्परेचर सॉरी अगर एंगल इज 45 डिग्रीज, तो ये साइन 2 थीटा आपका हो जाएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। सो मैक्सिमम रेंज आर मैक्स की वैल्यू होती है V0² अपॉन जी। अब इन्होंने ये नहीं पूछा, मैक्सिमम रेंज नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है कि ऐसा क्या एंगल होगा कि जिसमें मैक्सिमम जो रेंज होगा वो मैक्सिमम रेंज के हाफ हो जाए। तो मतलब ये जो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू है इसको हाफ कर दें, ठीक है। तो इतनी रेंज हमें कैसे मिलेगी, तो इतनी रेंज लाने के लिए मतलब कौन से एंगल पे मिलेगी, तो V0² sin 2 थीटा अपॉन G कर देंगे, ठीक है। G से G कैंसिल, V0² से V0² कैंसिल। अब क्या बच गया हमारे पास, sin 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ बच गया। अच्छा, आपको ये याद होगा कि साइन 90 जो होता है वो साइन 30 जो होता है वो हाफ होता है, राइट। मतलब ये जो 2 थीटा की वैल्यू है ना, ये 30 डिग्रीज के इक्वल है, बिकॉज साइन ऑफ 30 इज हाफ। थीटा की वैल्यू आ गया आपके पास 15 डिग्रीज, दैट्स द आंसर। इस 15 कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, इफ वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी 0, हाउ फार विल इट फॉल इन टाइम t। अच्छा, ये तो सिंपल है गाइस। अब आप एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा रहे हैं, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं किसी सर्टेन हाइट से। अच्छा, एक सेकंड, ये मैं पहले मिटा दूं।
Let's take it that this is enough. Now, if you are dropping an object from a certain height, what will happen? This is your object and it is dropped. So of course you're dropping it, so its initial velocity is 0, and g is the acceleration of free fall, and t is the time taken, and all you need to do is just find out this distance s. So for this, it's simple. Just use the formula equation of motion. S is equal to ut plus half at squared. अच्छा, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो यही g आ गई आपके पास. u की वैल्यू 0 है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा. ये बन जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, h. तो हाइट आपकी आ गई. अच्छा, g की वैल्यू होती है 9.81, एक्चुअल वैल्यू ये बन जाएगा 4.9 टी स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि आपसे वैल्यूज की टर्म्स में पूछा हुआ है तो बी आंसर है इसका. ठीक है, बी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 14. न्यूटन सेकंड इज अ. अच्छा, ये वाला भी काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि न्यूटन सेकंड किस चीज का यूनिट है. अच्छा गाइस, यूनिट पूछा है आपसे. ठीक है, अगर बेस यूनिट पूछा होता तो फिर तो मोमेंटम भी था और इम्पल्स दोनों थे. यूनिट स्पेसिफिकली इम्पल्स का होता है. क्यों? क्योंकि देखिए, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स. ऐसा ही होता है. Although impulse and momentum are the same thing, but impulse is specifically that momentum which is calculated using this formula, which is the product of force and time. Okay, तो ये फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. एंड टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड. तो इसलिए इम्पल्स इज अ बेटर आंसर ओवर हियर. ये बीसीक्यू टाइप का है. ठीक है, नेक्स्ट 15. A 1.5 meter heighted weightlifter raised a weight of 50 kg to a height of 0.5 meter above his head. How much work is done by him? Okay, guys, ये देखें, let's assume that this is the lifter over here. Okay, let me make a rough sort of a diagram. Okay, this is your lifter over here. Okay, and he is 1.5 meters long. Oh no, wait, 1.75 meters high. And he takes the object to 0.5 meters above his head. Okay, now what happens next? And the mass of the object is 50 kg. The total height is going to be the sum of these two heights, right? It's going to be 2.25 meters. Now you have the height, you have the mass. All you need to do is just find out the energy, right? Energy can be calculated using mgh. M is 50 times g is 10 times 2.25, and the answer is 1125 actually joules. Okay, this is what we calculated, but they haven't given us 1125 anywhere, so it's t, 1225 joules. Now next, what is the speed of 2 kg metallic bob at a mean position of simple pendulum which is released from its extreme position 0.5 meter high? Okay, they're just asking us the speed. So now guys, listen, it is being released from a height, and then okay, it is being released from a height, and then at the mean position we are required to find out its speed. So guys, देखें, अगर एक पेंडुलम को आप किसी हाइट से अगर आप रिलीज कर रहे हैं और मीन पोजीशन पे स्पीड निकालना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वेल, हाइट का क्या मतलब कि उसके पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी. मेन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब ये होगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to change in kinetic energy according to law of conservation of moment energy. ठीक है, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होगा, and kinetic energy का half mv squared होगा. Masses cancel out हो गए. Now all we need to do is just find out the velocity, right? So it's going to be 2gh, and then take its square root, you'll get your velocity. So it's going to be 2 times, what's the g? It's 10, and what's the height? It's 0.5 meters. That's that, and it's going to be 3.1 something, 3.16. Yep. Square root of 10 निकालना तो आता ही होगा सबको. Square root of 9 क्या होता है? 9 करीब है ना, 9 it's 3. इन दोनों का डिफरेंस 1 है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.1 के इक्वल होगी. ठीक है, ये वैल्यू इस तरह से मैंने याद किया था. आगे, when the speed of your car is halved, by what factor does the kinetic energy decrease? Kinetic energy का formula होता है, it's half mv squared, right? So if the speed is halved, kinetic energy is proportional to the square of velocity. That means if the velocity is halved, then the kinetic energy will decrease by 4 times. It will become 1/4. Okay, if you plug in the half over here, it will become, the kinetic energy will become 1/4 of its original value.
क्योंकि स्क्वायर रिलेशनशिप है, ठीक है, क्योंकि आप हाफ करेंगे काइनेटिक वेलोसिटी को तो हाफ स्क्वायर क्या हो जाता है 1/4, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ 18, which one of the following force is नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिखा हुआ है, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सो इट्स फ्रिक्शनल फोर्स। ये कुछ एग्जांपल्स आपने याद करनी थी, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आगे चलें, ठीक है। 19, द अर्थ रोटेट्स, ओके, दिस इज a question which was actually not very into the syllabus of Sindh board, but it is in Punjab board of course। ये तो कर लेते हैं, ठीक है, ये मोमेंटम का क्वेश्चन है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस अ डे, ठीक है, 24 आवर्स में अर्थ एक बार रोटेट कर लेता है। Suppose by some process the earth contracts so that its radius is half as large as its present, and how long will it take the earth to complete its rotation? Okay guys, गौर से सुनना है। पहले इन्होंने कहा कि अर्थ का रेडियस r था फॉर इंस्टेंस, तो उस वक्त टाइम पीरियड था 24 आवर्स। इतने टाइम में अर्थ जो है वो रोटेट कर लेती थी। अब कह रहे हैं कि रेडियस r नहीं हाफ हो गया, अब बताएं टाइम कितना होगा। पहली बात तो ये कि गाइस मास में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अर्थ पहले इतनी थी, ठीक है, अब उसके हाफ हो गई है, ठीक है। अब रोटेट तो अब भी करना है इसे। एंगुलर मोमेंटम अगर आपको याद हो, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है I मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। I क्या होता है भाई? I is the impulse, right? Sorry, not the impulse, is the moment of inertia, and omega is the angular velocity. You guys must have studied the law of conservation of angular momentum. So angular momentum अगर कंजर्व रहता है तो चाहे वो बड़ा ऑब्जेक्ट हो या छोटा ऑब्जेक्ट हो, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम दोनों का सेम होगा। एंगुलर मोमेंटम का तो ये फॉर्मूला है I मल्टीप्लाइड बाय V। So angular momentum of the smaller earth must equal the angular momentum of the bigger earth, ठीक है, because angular momentum is conserved of course. The smaller earth is gonna be moment of inertia of the smaller earth multiplied by the omega of the smaller earth, moment of inertia of the bigger earth multiplied by the moment of omega of the bigger earth. Now guys, you must be knowing the formula of moment of inertia for a sphere, and now this is very typically present in the federal board books, okay, whether it's actually Punjab board book or the KPK book, it's present in both of them, okay. For a sphere, the formula is 2/5 mr squared, okay, where m represents the mass and r represents the radius and I represents the moment of inertia. Now guys, अब ये चीजें प्लग इन करनी है, ठीक है। स्मॉलर अर्थ के लिए रेडियस कितना है? हाफ है, राइट। तो यहाँ पर हमें 2/5 मल्टीप्लाइड बाय मास तो सेम ही है, लेकिन रेडियस हम अज्यूम कर रहे हैं कि पहले रेडियस r था ना, अब हाफ r है तो हाफ r प्लग इन कर लें और हाफ r स्क्वायर्ड होगा क्योंकि ये 2/5 mr स्क्वायर्ड है मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा s। अच्छा, ओमेगा का क्या फॉर्मूला है? ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π टाइम पीरियड। रिमेंबर, टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉलर अर्थ, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे, 2/5 m मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर, क्योंकि ये तो बिगर अर्थ की r ही रेडियस है, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा इट्स 2π द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ। ओरिजिनल टाइम पीरियड 24 आवर्स था, ठीक है। बस अब इसको सिंपलीफाई करना है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 2/5 m से 2/5 m कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, राइट। बचा क्या? वही ये हाफ है ना, हाफ स्क्वायर्ड है एक्चुअली, तो ये 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 ts is equal to 1/24। अब ts is equal to 24/4 हो जाएगा, which is equal to 6 hours। गाइस ये एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, तो जिस किसी ने भी ये किया होगा तो उम्मीद है कि उसने ये एंड में ही किया होगा, ठीक है। एंड में ही करना चाहिए टू सेव टाइम, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का न्यूमेरिकल एक आधी आता है, लेकिन जब आ जाता है तो टाइम जरूर निकालता है, तो इसलिए इट्स बेटर, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू डू सच न्यूमेरिकल्स इन द एंड।
1 रेडियन इक्वल्स टू 57.3 डिग्रीज। ये तो कर लेना यार, आपको पता है कन्वर्जन के पाई रेडियंस कितने डिग्रीज के इक्वल होती है, 180 डिग्रीज। ये बताओ 1 रेडियंस कितने डिग्रीज के इक्वल होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब अगली वीडियो में मैं 21 ऑनवर्ड्स करूंगा। एंड गाइज, if you are new to this channel, so please do subscribe it, okay, if you haven't done so. And apart from that, good luck. Meet you in the next video pretty soon. Take care.